Assalamualaikum class. Welcome to your next KG2 class for maths. Today we are going to do our maths work in maths book. Open your maths books. World of numbers. Open your books. Page number 8. Page number 8. Today we are going to do page number 8. You can see it down here. Page number 8. First of all, write today's date, 14th July 2020. 14th July 2020. Write CW, time to listen. Now it is a time to listen a story. Story time, Jack and the Beanstalk. What we have to do, we have to circle the shorter beanstalk. You can see two trees, beanstalks. You have to circle the shorter one. One is tall and one is short. We have to circle the shorter one. So, start over here. Circle the shorter picture. Very good. Next, circle the taller giant. There are two giants. They are saying circle the taller giant. This one is tall and this one is short. What we have to do? We have to circle the taller giant. We have to circle this one giant. Then circle the bag with less beans. There are two bags. In one bag there are 1, 2, 3, 4 beans, and in one bag there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Which bag has less beans? This one. Yes. So we have to circle the bag with less beans. So circle this bag. Good. Now circle the basket with more eggs. There are two baskets. In one there are 3 eggs and in one there are more than 3. We have to circle the basket with more eggs. So we will circle the basket in which there are more eggs. So circle this basket. Very good. Now come down. Circle the bigger eggs. There are 2 eggs. We have to circle the bigger eggs. One is big and one is small. We have to circle the bigger one. Very good. Come in the next box. Circle the smaller heart. You can see 2 hearts. We have to circle the smaller one. One is big and the other one is small. So we have to circle the smaller heart. Very good. There is the concept of shorter, taller, less, more, bigger, smaller. All this work you have done before also. So you have to do this work very nice. Now what we are going to do, take out your worksheets. This is your maths worksheet. Open your maths worksheet, page number 8, 9 and 10. How many pages we have to do? In your worksheet, 3 pages. Page number 8, page number 9 and page number 10. Very good. Write the date on the top, 14th July 2020. Same on the next page, 14th July 2020. And on page number 10 also we have to write 14th July 2020. Your work is very easy. What you have to do, you can see the number written on the top, 9. You can see the dots. You have to trace on these dots. Now what you have to do, you have to look on the top, read the counting and then write down. You can see I am doing your work. Same method you have to do on the full page. Write on the dots, 1, 0, 10. Same work you have to do on the full page. Whole line you have to complete like this. Very good. Next, 1, 1, 11. You have to write on this and you have to look and write down. Read and write 11. Same you have to do on the whole page. Then comes number 12. Trace on these dots, 1, 2, 12. Look on the top and then write down. Same method, you have to complete the full page.
Very good. Same way, you have to complete page number 9, write on the dots and write down. Write 14, write down. Write on the dots 15, then write down. 16, write down. Turn your page. Page number 10, same method, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. You have to complete this page very nicely, neatly, and please don't make your books dirty. Read the counting till 20 while writing. Now take out your school copy. This was your worksheet, and now we are going to do our copy work. You can see our copy work, it's written maths. There are 2 copies of maths, one is your homework and one is your classwork. Same work you have to do on both the copies, in your classwork copy and in your homework copy. What we have to do is, today we are going to do our backward counting. Before we have done our counting from 19 to 0, but today we are going to do from 49 to 0. You can see my heading. First of all, let us write the date. What is the date today? 14th July 2020. Then write the heading backward counting 49 to 0. We are doing classwork, so we have to write CW. Draw lines. Please always do your work after drawing the lines. आप उर्दू में काम करें, इंग्लिश में काम करें, मैथ्स में काम करें, प्लीज सबसे पहले अपनी मार्जिन लाइन लाजमी ड्रॉ करें. प्लीज रिमेंबर, ड्रॉ योर मार्जिन लाइन फर्स्ट एंड देन स्टार्ट योर वर्क. Right now, write T. T stands for tens. U stands for ones. Unit. Unit means one number. Then write, leave one line. Then write T U. Then leave again T U. Then leave one line again and write T U. Start from 49 because we have to end on 49. I am on the top of the building and I have to come down to the floor, to the basement. So I will start my counting from the backward. 49. What comes before 49? 48. What comes up before 48? 47. 46. हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं और हमें बेसमेंट में आना है. हम सीढ़ियाँ गिनते हुए आएंगे. एक बार तो हम चढ़ गए 1 2 3 4 5 6. अब हम उतर रहे हैं तो बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए उतरेंगे. 49, 48, 47, 46. What comes before 46? Yes, 45. Then write 44, 43. Touch the lines and then write 42, 41. What comes before 41? 40, 40. Very good. Then comes 39. What comes before 40? 39. Now start from 39. 38, 37, 36, 35, 34, 32, 32, 33, 32, 31, 30, 30. It's end on 30. What comes before 30? 29, 29. Then write 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. What comes before 21? Yes, 20, 20. Then start from 19. 19, 19. 18, 18. 17, 17. 16, 16. 15, 15. 14, 13, 13. 12, 12. 11. And what comes before 11? Yes, 10, 10. These are the numbers of tens. Tens means 2-digit numbers. Now come to single word, single number which is 1 and unit. You can call this number 1 or unit.
In unit, we always write single number like 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are single numbers. These are called unit and these are called ones. So write 9. Now we are very near to the floor. We are very near to the basement. हम basement के बहुत करीब है. तो हम क्या करेंगे? अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Very good. Now we are on our basement. This was our work. Write this work. Repeat this work at least 5 times. Read the counting while going up to the stairs and coming down to the stairs. This was your work. You have to do your same work in your homework and in your classwork. See you next time. Allah Hafiz. Assalamu alaikum class. Welcome to your KG2 class. आज हम अपने उर्दू का काम करेंगे. अपनी उर्दू की कॉपी निकालें. माइंड क्वेस्ट उर्दू कॉपी सीरीज सफ़ा नंबर 15. सफ़ा नंबर 15 करेंगे आज हम. सफ़ा नंबर 15 में आज की तारीख लिखेंगे. आज की तारीख है 14 जुलाई 2020. हुरूफ तहज्जी तरतीब से लिखें. आपको यहाँ पर अलिफ से ये तक लिखनी है हुरूफ तहज्जी और वो तरतीब से लिखनी है. आप लोग मेरी कॉपी में काम देख रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग अपनी कॉपी में काम करेंगे. जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ उसी तरीके से आपने अपना काम अपने घर में पूरा मुकम्मल करना है. चलें शुरू करें. अलिफ मद आ, और याद रखें इन दोनों को लाइन से टच करके बनाना है. फिर हम लिखते हैं बे के नीचे एक नुक्ता, फिर आता है पे के नीचे 3 नुक्ते. और प्लीज़ नुक्ते इस तरीके से डालेंगे. मोटे मोटे सर्कल्स आप लोग डाल देते हैं नुक्तों में, ये नहीं करेंगे. फिर आता है पे के बाद ते के पेट में 2 नुक्ते, टे के पेट में छोटी तो है. फिर आएगा से के पेट में 3 नुक्ते. अब दूसरी लाइन में हम लिखेंगे जीम चे हे खे, और जीम चे हे खे चारों हुरूफ लाइन से नीचे बनेंगे. जैसे कि आप कॉपी में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगे. दाल दाल जाल, रे अरे जे से, ये भी एक ही लाइन में लिखेंगे और ये सारे हुरूफ लाइन से नीचे आएंगे. फिर आ जाए सीन शीन, सीन और शीन भी लाइन से नीचे लिखेंगे. स्वाद द्वाद भी लाइन से नीचे आएगा. स्वाद के खाली ए द्वाद के ऊपर 1 नुक्ता. फिर आता है तोए, इसको लाइन से टच करके बनाएंगे. जोए, इसको भी लाइन से टच करके बनाएंगे. आइन लाइन से नीचे बनेगा. गैन लाइन से नीचे बनेगा. फे काफ काफ गाफ, लाम मीम नून वाव हे हमजा, छोटी है बड़ी है. 2 नुक्ते वाला काफ भी लाइन से नीचे, लाम भी लाइन से नीचे, मीम और नून भी लाइन से नीचे. वाव का हल्का सा जो आती है डंडी, वो भी लाइन से नीचे बनेगी. फिर आता है छोटी है, वो भी लाइन से नीचे बनेगा. जैसे आपने ये वाला काम किया है सफ़ा नंबर 16, आप तारीख के साथ घर से मुकम्मल करेंगे देखकर. ये आपका होमवर्क है. सफ़ा नंबर 16 बिल्कुल सफ़ा नंबर 15 को देखकर आप फॉलो करेंगे. जिस तरीके से आपको सफ़ा नंबर 15 करवाया गया है उसी तरीके से आपने सफ़ा नंबर 16 मुकम्मल करना है. ये है आपका क्लास वर्क और होमवर्क. काम सफाई से करें, इसकी दोहराई बार बार करते रहें. इसको खाली जगह के तौर पर भी याद करें. ये था हमारा आज का काम. काम सफाई से करके अपनी कॉपीज चेकिंग के लिए लाइए. फिर मिलते हैं अगली क्लास में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.